अच्छा, एक सेकंड, just give me a moment. Assalamu alaikum everyone. Thank you for joining today's Zoom session. आज का जो session है, it's about postgraduate trainee program and the role of PMC. Today we are joined by Dr. Arshad Taqi, who's president of PMC. We're also joined by Dr. Asif Loya, who's a consultant pathologist, medical director at Shaukat Khanum Memorial Hospital. And he is the medical member at the Medical and Dental Council of PMC. We're also joined by Dr. Rumina Hassan, who is a professor of pathology and microbiology at Khan University, and she's also the medical member of the Medical and Dental Council here at PMC. Thank you all for joining us today, for taking time out of your busy schedules for this session. I would like to begin with the first question for Dr. Taqi, which is, what is ये जो कॉन्सेप्ट है पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन का, ऑल्टरनेट क्वालिफिकेशन का, एडिशनल क्वालिफिकेशन का, इसके ऊपर से थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया सरमद, आपने ये मेरे से हमें मौका दिया दोबारा से ये चीज़ों को क्लैरिफाई करने का। जो ये पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है, कानून ये कहता है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने स्पेशलिस्ट, क्योंकि सोसाइटी को चाहिए, तो स्पेशलिस्ट को डिफाइन करने के लिए कहा कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन क्वालिफिकेशन करेगा डिटरमिन, और उसके अलावा ऑल्टरनेटिव और एडिशनल क्वालिफिकेशन, ये 3 टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की गई कानून के मुताबिक। तो हमारा सबसे पहला ये था चैलेंज कि इन 3 टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन किया जाए। सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन, किसी भी क्वालिफिकेशन तीनों को के अंदर एक फ्रेमवर्क बनाया गया, और वो ये था कि क्वालिफिकेशन वो होती है जो मिलती है एक प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम के नतीजे में जिसमें शुरू से ही डिफाइन कर दिया जाए कि इस प्रोग्राम के एंड पे इस प्रोग्राम से गुजरने वाला जो डॉक्टर होगा वो क्या क्या उसके अंदर सलाहियतें, क्या क्या कॉम्पिटेंसीज वो अचीव कर लेगा। पहले एट द आउटसेट के डिजायर्ड कॉम्पिटेंसीज हों, फिर वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली सुपरवाइज ट्रेनिंग से गुजरा हो, और उस सारी ट्रेनिंग के प्रोसेस के एंड पे एक सर्टिफिकेशन हो कि ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। ये जो इस प्रोसेस से गुजर के जो होगी वो क्वालिफिकेशन होगी। पहली टर्म है क्वालिफिकेशन। उसको क्लैरिफाई कर दूं कि कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, ये पाकिस्तान कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान इज दैट पोस्ट ग्रेजुएट क्लिनिकल डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन। उसकी जो डिग्री है पाकिस्तान CPSP की, दैट इज द क्वालिफिकेशन, जो कि हमारे एक स्टैंडर्ड बेस लाइन है। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस सर्जन पाकिस्तान जो FCPS की डिग्री देता है, वो डिग्री क्वालिफिकेशन है। हर वो डिग्री जो कि उस डिग्री के कहा जाए कि इक्विवेलेंट होगी या वो कॉम्पिटेंसीज देगी जो कि FCPS देती है, उसके बराबर की क्वालिफिकेशन की कॉम्पिटेंस देगी, उसको कोई दूसरा इदारा देगा जो कि रिकग्नाइज्ड होगा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से, जैसे कि यूनिवर्सिटीज हैं, तो वो ऑल्टरनेटिव क्वालिफिकेशन के तौर पे तस्लीम होगी। अब इसके अलावा एक तीसरी टर्म है एडिशनल क्वालिफिकेशन। एडिशनल क्वालिफिकेशन के लिए बेसलाइन पैरामीटर्स वही हैं कि वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होगा, डिफाइंड कॉम्पिटेंसीज होंगी, सुपरवाइज्ड होगा, एंड ऑफ प्रोग्राम एक सर्टिफिकेशन होगी, कंफर्मेशन होगी कि ये कॉम्पिटेंसीज अचीव हो गई हैं। ये सब प्रोसेस जो है, लेकिन ये क्वालिफिकेशन जो है 2 तरह से हो सकती है। एक तो क्वालिफिकेशन है कि पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन आपके पास ऑलरेडी है, मसलन FCPS है, उसके बाद आप एक सेकंड FCPS कर लेते हैं। वो सेकंड FCPS जैसे हमारे यहाँ पे है कि FCPS का यूजुअल ड्यूरेशन 4 इयर्स है, तो वो जो सेकंड FCPS है, जैसे कि अगर आपने मसलन आपने सर्जरी में की है तो उसके बाद कार्डियक सर्जरी में करना चाहते हैं, या इस किस्म की कुछ और है जो कि सेकंड क्वालिफिकेशन हैं, जैसे कि आपने मेडिसिन या सर्जरी या एनेस्थीसिया में किया है तो आप क्रिटिकल केयर की सेकंड फेलोशिप करना चाहते हैं, वो 2 साल की है,
تو وہ ایڈیشنل کوالیفیکیشن ہوگی. اس کے علاوہ کچھ کوالیفیکیشن ایسی ہیں کہ جو کہ اس وقت ہمارے پاس ڈپلوماز کی فارم میں اور شارٹر ڈیوریشن کے پروگرامز ہیں جو کہ ریکگنائزڈ ہیں کالج آف فزیشین سے, وہ یا ان کے ایکویولنٹ پروگرام جو اس کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں, ان کو بھی ہم ایڈیشنل کوالیفیکیشن کے طور پہ رجسٹر کر رہے ہیں یا لائسنس پہ انڈورس کر رہے ہیں. وہ کوالیفیکیشن آپ کو اسپیشلسٹ, ہائر اسپیشلسٹ رجسٹر پہ تو نہیں لے کے آئیں گی, لیکن یہ ایک سرٹیفکیشن ہوگی کہ یہ ایک اسٹرکچر پروگرام کے تحت جا چکا ہے, اور اس کی بیسس پہ جو آپ کا امپلائر ہے آپ کو پریولیجز دے سکتا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. سو یہ 3 چیزیں ہیں کوالیفیکیشن. آئی ہوپ کہ میں نے یہ ڈیفینیشن کلیئر کر دی. سو کوالیفیکیشن پاکستان کے کانٹیکسٹ میں FCPS ہے. ایڈیشنل کوالیفیکیشن وہ کوالیفیکیشنز ہیں جو کہ یونیورسٹیز جو دے رہی ہیں, جیسے MDMS ہے. اور ایڈیشنل کوالیفیکیشن جو ہیں وہ ساری کی ساری وہ ہیں جو کہ آپ کو اس کے علاوہ مل رہی ہیں. Thank you for the added clarity, sir. My next question to you is کہ جو فریم ورک پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کا ہوتا ہے پاکستان میں وہ کیا ہے, اس پہ تھوڑا سا اگر آپ الیبریٹ کر سکیں. بس یہ بریفلی یہ ہے کہ جب ایک ڈاکٹر کر لیتا ہے, گریجویشن کر لیتا ہے, ہاؤس جاب کمپلیٹ کر لیتا ہے اور اس کو فل لائسنس ملتا ہے, تو وہ کسی نہ کسی بائی چوائس وہ چاہتا ہے کہ وہ اسپیشلسٹ بنے, تو وہ اسپیشلسٹ پروگرام کے اندر انٹر ہوتا ہے. اور اسپیشلسٹ پروگرام کے اندر جیسے کالج آف فزیشنز اور سرجنز ایک کرائٹیریا رکھتا ہے کہ جی آپ نے پارٹ 1 کرنا ہے, جس سبجیکٹ میں آپ نے پارٹ 1 کرنا ہے آپ اس پروگرام کے اندر انٹر ہوتے ہیں, یا جو بھی کوئی پاتھ وے ہے اس میں آپ فارملی ایک پروگرام کے اندر آپ رجسٹر ہوتے ہیں. اس پروگرام کے اندر آپ اس پروگرام کی جو ڈیزائرڈ کمپٹنسیز ہیں, جو اس کے پاتھ ویز ہیں, اس کو آپ فالو کرتے ہیں ایک سپروائز طریقے سے. اور جب آپ اینڈ میں جاتے ہیں تو پاکستان کے کیس میں تمام ایک ایگزٹ ایگزامز ہیں, اس ایگزٹ ایگزام کے نتیجے میں آپ کو ایک ڈگری ملتی ہے. اس ڈگری کی بنیاد پہ جو کہ ایک ریکگنائزڈ ڈگری ہے بائی پاکستان میڈیکل کمیشن, آپ کو پاکستان میڈیکل کمیشن ایک اسپیشلسٹ کے طور پہ پریکٹس کرنے کا ایک لائسنس دیتا ہے. تو یہ ایک پوسٹ گریجویٹ پاتھ وے ہے جو کہ ایک اینڈ میں جو لائسنس ملتا ہے وہ لائسنس یہ کہتا ہے کہ آپ ایک اسپیشلسٹ کے طور پہ پریکٹس کر سکتے ہیں. Thank you, sir. My next question is for Dr. Asif Loya. Sir, under the PMC Act 2020, what is the role of PMC, postgraduate training کے لیے؟ تھینک یو سر مد. سو اس میں بڑا کلیئر ہے, ایز اے جیسے ڈاکٹر تقی نے انیشلی بتایا, پوسٹ گریجویٹ کوالیفیکیشن اینڈ دین آلٹرنیٹ اینڈ دین ایڈیشنل کوالیفیکیشن. سو CPSP کو وہ جو رول ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے ایز دا ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ فار دس کنٹری ایز پر دا لا, اور ان کی جو بھی ڈگریز ہیں وہ PMC آٹومیٹکلی ریکگنائز کرتا ہے انلیس وہ آنرری ڈگریز ہوں. اگر وہ آنرری ڈگری ہے تو وہ پھر لائسنس پہ انٹر نہیں ہوگی, لیکن جو بھی ایک پراپر کیوریکولم کے تھرو ڈگری حاصل کی گئی ہے, گوئنگ تھرو اے ٹریننگ پروگرام اینڈ گیونگ دا ایگزام, ایگزٹ ایگزام, تو وہ ڈگری جو ہے وہ PMC کے لائسنس کے اوپر ریکگنائز کی جائے گی اور انٹر کی جائے گی. اینڈ سملر holds true for the additional qualification. For example, اگر سب اسپیشلٹی کے اندر کوئی ٹریننگ کی گئی ہے, جیسے کہ اگر انٹرنل میڈیسن آپ نے کیا ہے, اس کے بعد آپ میڈیکل انکالوجی کر رہے ہیں, اس میں FCPS, یا پھر جیسے ڈاکٹر تقی نے بتایا کہ انستھیزیا ہے, یا کرٹیکل کیئر کی آپ ایڈیشنل کوالیفیکیشن انستھیزیا کے بعد لے رہے ہیں, تو وہ ساری جو ایڈیشنل کوالیفیکیشن ہے وہ بھی جو CPSP سے ایشو ہوتی ہیں یا ان کے کیوریکولم کو فالو کر کے انڈر گوئنگ دا ٹریننگ پروگرام جو آتی ہیں, تو وہ ساری کی ساری PMC کے اوپر ایڈ کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ اس رول کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جی آلٹرنیٹ کوالیفیکیشنز کیا ہیں. آلٹرنیٹ کوالیفیکیشنز یہ ہیں بیسکلی کہ جو کہ اینی یونیورسٹی اور اینی ہاسپٹل جو اپنے طور پہ کوئی پروگرام شروع کرنا چاہتا ہے, وہ ڈیسائیڈ کر لے MS پروگرام ہے یا MD پروگرام ہے یا جو بھی ہے, اس کی جو ریکگنیشن ہے وہ پہلے PMC سے کرانا لازمی ہوگی. جب وہ PMC سے ریکگنیشن ہو جائے گی تو اس کے بعد اس پروگرام کے تحت جو بھی ڈگری ایوارڈ ہوگی وہ obviously PMC کے لائسنس کے اوپر جو ڈاکٹر کو ملے گی اس کو وہ ایڈ ہو جائے گی. اور اس کی جو ریکگنیشن ہے اس کی پورا ایک پروسیس ہوگا جو ڈیفائن کیا جائے گا کہ جی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, فیسلٹیز پوری ہیں اس ہاسپتال میں یا اس یونیورسٹی کے اندر, جو کہ PMC خود ڈیفائن کرے گا, اور اس
ان فیسلٹیز کی جو ایکریڈیشن ہے وہ PMC کی جو ایکریڈیشن ٹیم ہوگی جو بھی اس ریلیونٹ اسپیشلٹی سے ہوگی وہ جا کے اس کو ریکگنائز کرے گی. دیٹس ون تھنگ. دوسرا جو اس رول کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی اگر کسی لیول کے اوپر کوئی کلیئرٹی کی کسی کوالیفیکیشن کے لیے ضرورت ہے تو PMC will talk to CPSP because they have their defined curriculums, they have their defined hours of training, what is the requirement and all that, and the exams that they conduct. So اس کے اندر اگر کوئی clarity کی ضرورت ہے تو PMC can and will get advice from CPSP in that regard. The other thing is the foreign postgraduate training programs, جس کی ریکگنیشن جو ہے جو ریکگنائز ہو چکے ہوں گے PMC سے بیسڈ آن ڈیفائنڈ سیٹ کرائٹیریا, تو ان کے ساتھ جو ڈگری ایوارڈ ہوگی وہ ڈگری جو ہے وہ once they have been recognized by PMC, then those would be entered on the PMC license. So this is in a nutshell the whole idea and the rule that it talks about. So I think that's about it. If anyone, Dr. Taqi or Dr. Rumina, if you want to add something to this, then by all means, please do that. That's fine. That's fine. Okay, so thank you for the clarity. While we're talking about roles and responsibilities, my next question, اور اس کے اوپر کافی زیادہ سوال بھی آتے ہیں کہ جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے جو امپارٹ کر رہا ہے PG ٹریننگ, اس کی کیا ریسپانسبلٹی ہوگی in this process? So ٹیچنگ ہسپتال کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جی جو ریلیونٹ اور جو ریکوائرڈ فیسلٹیز ہیں فار اینی اسپیشلٹیز وہ اس ہسپتال میں اس ٹریننگ کو امپارٹ کرنے کے لیے جو فیسلٹیز ہیں, فار ایگزامپل ریلیونٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز موجود ہیں, ریلیونٹ اگر لیب ہے تو ریلیونٹ لیب کی جو اینالائزرز ہیں وہ موجود ہیں, جو ٹیکنیکس ہیں وہ اویلیبل ہیں, اگر کوئی مولیکولر کی ٹریننگ ہے, ہسٹوپیتھولوجی کی ٹریننگ ہے, یا فار دیٹ میٹر اگر اینستھیزیا کی ٹریننگ ہے, سو ڈو دے ہیو دا ریلیونٹ مشینز ان دیئر facility and the relevant supervisors. So all those things, یہ ٹیچنگ ہسپتال کا کام ہے کہ وہ ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کرے. اس کے بعد obviously اس کو ایکریڈیٹ کیا جائے گا بائی PMC کہ جی اس ٹیچنگ ہسپتال کے پاس وہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں جو کہ اس اسپیشلٹی کے اندر کسی بھی ڈاکٹر کو ٹرین کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں کسی بھی ایک لوکل اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے تحت. تو دیٹس دا رول آف اے ٹیچنگ ہاسپٹل. PMC کا رول obviously regulator کا ہے, as we all know, and their role is to make sure that all the facilities that are required do exist, so that a doctor when he or she comes out of this training program from that teaching hospital has the requisite he's followed the curriculum, he's undergone all the requisite hours of relevant جس modules کے اندر جو ضروریات ہیں وہ پوری کر چکے ہیں تاکہ ایک مکمل اور ٹرینڈ ڈاکٹر جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے who's got the degree in the end. Thank you so much, sir. My next question is for you, Dr. Rumina. Will CPSP continue their role of recognizing postgraduate training programs? Certainly I would add جو ڈاکٹر آصف لویا نے کہا اس کو میں اسی کو دہراؤں گی کہ بالکل CPSP جو ہے وہ انڈیویجول پروگرامس کو ریکگنائز کرے گا, لیکن انڈیویجول پروگرامس کو. سو دے ول ریکگنائز فار ایگزامپل فیلوشپ فار اینستھیزیا, اور they will recognize histopathology اور infectious diseases. So وہ individual programs recognize کریں گے اور اس کے تحت وہ دیکھیں گے کہ وہ جو اس پروگرام یا اس انسٹیٹیوشن ہے اس میں capacity ہے to implement and train provide training in that program. ان کے پاس ٹرینرز ہیں کافی, ان کے پاس سامان ہے, equipment ہے, reagents ہیں, ان کے پاس facilities ہے, operating theatres ہیں, laboratories ہے, ریڈیولوجی, اگر ڈپینڈس کس شعبے میں ان کو ٹریننگ حاصل کرنا ہے. تو CPSP اس کو دیکھے گا انڈیویجول پروگرامس کو, آیا اس اسپتال میں مریض کافی ہیں اس شعبے کی ٹریننگ دینے کے لیے, تو CPSP اس کو دیکھے گا, اس کی اس انسٹیٹیوشن میں یا اس شعبے میں ان کے پاس ٹریننگ امپلیمنٹ کرنے کی میکینکس ہیں, اس کو مانیٹر کرنے کے میکینکس ہیں, پراپر ٹریننگ
प्रोवाइड करने के मैकेनिक्स हैं तो वो तो CPSP देखेगा इंडिविजुअल प्रोग्राम्स की. PMC अलबत्ता इंस्टीट्यूशन को देखेगा कि इंस्टीट्यूशन में कैपेसिटी है ये मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करने के लिए, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास लाइब्रेरी है, उनके पास ट्रेनिंग वो ट्रेनीज को बैठाने की कैपेसिटी है, उनके पास स्टाफ है, ओवरऑल उनके सिस्टम्स हैं टू सेफगार्ड एंड प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग एंड टू मॉनिटर कि जो उनके इंडिविजुअल प्रोग्राम्स हैं वो ट्रेनिंग दे रहा है वो आया सही तरह से मॉनिटर कर सकते हैं, सही ट्रेनिंग उनके ट्रेनीज को मिल रही है, एंड टू मेक श्योर द ट्रेनीज आर so they will look at the institutions and they will approve the institutions, but the CPSP will approve the individual programs. Thank you, Dr. Rumina. My follow-up question is कि जो degree awarding institutions हैं, other than CPSP, उनका क्या role है? देखिए CPSP तो वो तो जो जैसे डॉक्टर लोया ने कहा, डॉक्टर अरशद तकी ने कहा कि वो जो उनके प्रोग्राम है वो तो ऑटोमेटिकली PMC रिकॉग्नाइज करता है. जो डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रोग्राम्स हैव टू बी registered approved by the CPSP, तो sorry with the PMC. तो PMC उनको देखेगा कि आया प्रॉपर क्लिनिकल ट्रेनिंग है, वो प्रोग्राम्स कॉम्प्रिहेंसिव है, उस शोबे के हवाले से उसके प्रॉपर करिकुलम बना हुआ है, उसकी प्रॉपर TURs बने हुए हैं, तो वो PMC उसको देखेगा और उसके हवाले से फिर वो अप्रूव करेगा. तो वो इंडिविजुअल प्रोग्राम्स को अप्रूव करेगा, अगर वो अप्रूव हो गए तो फिर वो ऑटोमेटिकली PMC उनको रिकॉग्नाइज कर लेगा. Thank you, Dr. Rumina. Dr. Taqi, there seem to be three main entities relevant to postgraduate training. एक आपका teaching hospital है, फिर आपका CPSP है, and then there are universities awarding postgraduate alternative qualification. So my question is, what is their respective role in postgraduate training? You can shed some light on that. जी क्लैरिफाई कर दूं जी, ये दोनों चीज़ें काफ़ी हद तक क्लैरिफाई तो डॉक्टर रुमीना, डॉक्टर आसिफ बता चुके हैं कि इनके इंडिविजुअल रोल्स क्या हैं. एक ब्रीफली आउटलाइन अगर आप इसी सारे को समराइज कर दूं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जाके एक प्रोग्राम को देखा और एक हॉस्पिटल को देखा और उन्होंने कहा कि जी ये हॉस्पिटल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने के लिए सूटेबल है, इनके पास वो तमाम सिस्टम्स भी मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, मैन पावर ह्यूमन रिसोर्स भी मौजूद है. सो उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया. अब जब वो रिकग्नाइज कर लिया तो वहाँ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने मसलन जाके उसको इंस्पेक्ट किया और उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल के अंदर इन फला स्पेशलिटीज़ के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स चल सकते हैं, इनके लिए उनके पास ये तो मौजूद है, उसके अलावा नहीं. सो ये कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने अगर किया तो ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम रिकग्नाइज हो गए उस हॉस्पिटल के अंदर. एक यूनिवर्सिटी अगर वहाँ कोई प्रोग्राम चलाना चाहती है या कोई डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन जो रिकग्नाइज्ड है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से, तो उन्होंने वो प्रोग्राम का वो प्रपोजल बना के दिया और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने उसको रिव्यू किया और वो रिव्यू होके अगर वो उन्होंने रिकमेंड कर दिया तो फिर वो प्रोग्राम रजिस्टर हो गया as a postgraduate training program in that particular recognized hospital. हॉस्पिटल का क्या काम है कि हॉस्पिटल ने ये तमाम फैसिलिटीज़ जो के रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी है और वो रिक्वायरमेंट वन टाइम पूरी नहीं करनी कि आपने इंस्पेक्शन के लिए पूरी करवा दी, बल्कि ऑन गोइंग प्रोसेस है कि आपने इंश्योर करना है कि तमाम के तमाम रिक्विजिट्स ये कंटिन्यूसली प्रोवाइड हो रहे हैं, ये सिस्टम्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं जब तक कि वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन या CPSP या वो यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने वो प्रोग्राम रन कर रही हैं वो सेटिस्फाइड होंगे तो वो प्रोग्राम चलते रहेंगे. सो कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है कि वो इंस्टीट्यूशन इंश्योर करे कि जो चीज़ें उन्होंने प्रॉमिस की हैं प्रोग्राम्स के अंदर रन करने की वो तमाम के तमाम वो फैसिलिटीज़ मुहैया कर रहे हैं उसके लिए, इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग अ गुड लर्निंग एनवायरनमेंट टू द ट्रेनीज, making sure that the number of patients, the facilities, they all remain what they have been at the outset. So ये तीनों का ये respective roles है. आइडिया ये है कि collectively वो एक एंड में एक competent specialist
प्रोड्यूस करते हैं जिसको कि मेडिकल कमीशन लाइसेंस दे के सोसाइटी के सामने पेश करता है. Thank you, sir. Thank you for the clarity. Dr. Rumina, my next question is for you. और ये है कि will the PMC take another examination like the NLE before giving them a license to practice as a specialist or a consultant? ये PG training से related. नहीं, the PMC the NLE exam is only for शुरू में जो fresh graduates हैं after the house job वो NLE करेंगे full registration के लिए, licensing के लिए. उसके बाद PMC कोई और एग्जाम नहीं लेगा. बाकी जो उनके स्पेशलिस्ट एग्जाम्स हैं वो फिर CPSP लेगा टू सी के वो CPSP या यूनिवर्सिटीज वो लेंगे अपनी शोबे खास शोबे के लिए. लेकिन PMC सिर्फ और फिर वो उनको PMC रजिस्टर करेगा. लेकिन PMC सिर्फ NLE एग्जाम लेगा, उसके अलावा नहीं लेगा. Thank you, Dr. Rumina. My next question काफी pertinent एक सवाल है, काफी ज़्यादा ये पूछा भी जा रहा है. It's for Dr. Asif. कि what is going to be the fate of programs that are currently running but not yet accredited by PMC? इसके ऊपर थोड़ा सा आप shed कर सकते हैं थोड़ी सी light. जी थैंक यू सो मच. सो आई थिंक ये पहले भी काफ़ी एक दो दफ़ा क्लैरिफाई हो चुका है PMC की एंड से, बट आई विल क्लैरिफाई इट अगेन कि हमने उनको ऑलरेडी कह दिया है कि जी जितने भी प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं दे शुड कंटिन्यू, द ट्रेनीज शुड कंटिन्यू. वी विल वेरी सून डिफाइन ए एक्रेडिटेशन प्रोसेस जिसको बहुत जल्द आ जाएगा, जिसको फॉलो करके विद इन अ डिफाइंड पीरियड इन द नेक्स्ट 3 to 4 months we will go and inspect the hospital as has been elaborated very clearly in this session as well. Us hospital ko accredit karne ke liye, just to make sure all the facilities are available for all the other training programs that are going on, not just CPSP but others as well, jo alternate wale programs hain. But as far as the current trainees and their programs which have been accredited by CPSP, they will continue as is. उनके ऊपर कोई issue नहीं है. वो जब accreditation का time आएगा तो our team will go and inspect that based on the accreditation process that has been defined by PMC, and that's the whole thing at the moment. कोई बार नहीं है, वो training अपनी जारी रखें जिस तरह वो चल रही थी उसी तरह चलती रहेगी जब तक के obviously वो accreditation का time आता है. जब accreditation हो जाएगी तो फिर भी वो continue रहेगी obviously, and hopefully every institute जिसके अंदर training हो रही है उसके अंदर कोई इशू होना नहीं चाहिए. I'm sure all the facilities will be available and all that. जिसमें नहीं होंगी उसमें अगर deficiencies हुई तो we'll ask them to complete the deficiency and and we'll give them certain amount of time कि आप ये deficiency complete कर लें, and we'll come and look at your facility to make sure that वो जो deficiencies हैं वो पूरी हो गई हैं कि नहीं. लेकिन as far as the current trainees go, they will continue and till the accreditation process comes in, and उसके बाद फिर भी वो continue ही रखेंगे till obviously the institute gets recognized. Thank you, Dr. Asif. On that note, Dr. Taqi, my sort of next question is कि recently Punjab government ने induction in PG program थोड़ी सी limit कर दी थी. Does this have anything to do with the recent change in the laws? Is there any role of PMC in these developments? इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप clarify कर दें, काफी ज़्यादा ये सवाल भी पूछा जा रहा है. ये लॉ तो हमने जैसे क्लैरिफाई कर दिया कि इस नए लॉ के तहत एक मैंडेटरी हो गया कि तमाम इंस्टीट्यूशंस जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कर रहे हैं दे नीड टू बी रिकग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान मेडिकल कमीशन. सो जो ऐसे डॉक्टर आसिफ ने कहा कि जब ये चीज़ आई और हमने देखा कि कई इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ प्रोग्राम्स चल रहे हैं और दोनों किस्म के प्रोग्राम CPSP FCPS के भी चल रहे थे, कुछ MDMS के भी चल रहे थे. FCPS के केस में just the institution needed to be inspected and recognized. MDMS के केस में both the institution and program had to be recognized. तो काउंसिल ने ये फैसला किया कि आप ये प्रोग्राम कंटिन्यू रखें. 6 months के अंदर अंदर हम ये सारी की सारी इंस्पेक्शन कंप्लीट कर लेंगे as soon as the accreditation criteria has been finalized. इस दौरान तो थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि कुछ ऑब्वियसली लोग जो ट्रेनिंग्स कर रहे थे अपने प्रोग्राम के अंदर उनको शायद ये एंग्जाइटी हुई कि अगर हमारा प्रोग्राम रिकग्नाइज नहीं होगा तो हमारा क्या बनेगा.
So they went to the court और उन्होंने वहाँ कोर्ट से के सामने ये प्ली ली कि हमारा क्या बनेगा, in which case the court ordered the government those institutions कि आप इनको फौरन recognize कराएं वरना इनको किसी recognized institution में shift करें. So government ने ऑफ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमसे एक खत लिख के पूछा कि ये जो रिकग्निशन की मैंडेटरी शर्त है ये क्या सिर्फ MDMS के लिए है या तमाम प्रोग्राम्स के लिए है. तो हमने उनको सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन दी कि ये सिर्फ तमाम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए है. अपेरेंटली वो गवर्नमेंट को क्योंकि अपना लाइबिलिटी का था कि हम एक प्रोग्राम करें और बाद में ऐसा ना हो, तो उन्होंने कुछ सस्पेंड किया. और हमें इस चीज़ का एहसास था और है कि देयर इज़ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी अबाउट इट, ताकि कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग जो है वो डिसरप्ट ना हो या उसमें मिनिमम डिसरप्शन हो. दैट्स वाई जैसे डॉक्टर आसिफ ने बताया कि हम इसको प्रायोरिटी बेसिस पे इंशाल्लाह ये इंस्पेक्शंस करेंगे. पहले उन इंस्टीट्यूशंस की दैट आर अवेटिंग, जहाँ प्रोग्राम चल रहे थे और अवेट कर रहे हैं, उसके बाद बाकी इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे और इंशाल्लाह उनको जल्द से जल्द हम करके ताकि कंटिन्यूटी बरकरार रहे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग की. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव दोज पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स रनिंग, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें स्पेशलिस्ट की बहुत ज़रूरत है. और दूसरा ये कि एक अनसर्टेनिटी जो बच्चों के, हम तो बच्चे ही कहूँगा मैं, हमारे बच्चे हैं कि जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज़ के और डॉक्टर्स के जहन में है उसको हम ख़त्म कर सकें जल्द से जल्द. बट माइंड यू, इसके सब के पीछे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो इशू है आपकी क्वालिटी का और लॉ को इम्प्लीमेंट करने का. वो एक चीज़ है जो कि हमें बहरहाल करना है और हम इंशाल्लाह करेंगे. So I hope that answers the question. Thank you so much, sir. So before I stop, if you allow me, Sarmad, I just read a question here which is unrelated to today's program, but since somebody has asked, तो मैं चाहूँगा कि उसका जवाब दे दूँ. This is regarding foreign students studying in overseas universities outside Pakistan. और उन्होंने कहा है कि जो पढ़ रहे थे और ये लोग, ये लास्ट 11 मंथ से इनमें से अक्सर जगहों पे ऑनलाइन क्लासेस हो रही, सेशंस हो रही थी. तो इन लोगों के जो वीज़ाज हैं वो भी ऑब्वियसली इस अरसे के दौरान दे डिडंट ट्रैवल टू दोज यूनिवर्सिटीज, दे वर इन पाकिस्तान. तो इसका एग्ज़ाम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जो एनएलई एग्ज़ाम है वो आपको देते हैं जब आप एक दफ़ा वहाँ से ग्रेजुएशन करके डिग्री लेके आते हैं, और जो भी लाइसेंसिंग पाथवे है उससे गुजर के आप हाउस जॉब अपनी रेजिडेंसी कंप्लीट करते हैं या उस प्रोसेस में जब आप एनएलई के लिए क्वालिफाई करते हैं. सो अगर आपका नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम की नौबत तो उस वक्त आएगी, आपकी यूनिवर्सिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपका ग्रेजुएट प्रोग्राम कंप्लीट कराएं. और वो उसके अंदर उन्होंने जो वो काम ऑनलाइन सेशन लिए हैं, जो क्लिनिकल आवर्स आपके कंप्लीट कराने हैं, वो सब कुछ करवाना आपकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिग्री देने से पहले जितना भी कोर्स वर्क है आपका कंप्लीट कराएं, उसके बाद एग्ज़ाम लेके डिग्री दें. उसके बाद नौबत आएगी आपके लाइसेंसिंग पाथवेज की. सो उससे पहले हमसे ये सवाल आई थिंक इट्स अ लिटिल प्रीमेच्योर. Thank you, sir. Sir, एक और सवाल आया है, since we have a bit of time left, that I would like to ask. ये सीधा ज़ैन से आया है, and the question is, what is the promotion criteria for faculty in basic sciences? Is it the same as PMDC or has it changed? इस पे अगर आप थोड़ा जी, फैकल्टी जो स्टैंडर्ड्स अभी बन रहे हैं उसके अंदर फैकल्टी के भी जो भी क्राइटेरियाज हैं वो सामने आ जाएंगे. बाय एंड लार्ज वो प्रमोशन और जो है उसकी हम इस वक्त तक हम ये कह सकते हैं कि फैकल्टी के लेवल पे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का ये स्टैंस तो है कि जी एक इंस्टीट्यूशन में एक फैकल्टी का मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो डॉक्टर जो पढ़ा सकता है उसकी ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. उसके बाद इतनी फैकल्टी होनी चाहिए मिनिमम पढ़ाने के लिए. ये स्टैंडर्ड्स दो होंगे. उसके बाद बाय एंड लार्ज के किस स्टेज पे उसको आगे प्रमोट होना है
ये जनरली एक यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस का प्रेरोगेटिव होता है या वो फैसला करते हैं, लेकिन मैं इस पे अभी इस वक्त कुछ नहीं कह सकता जब तक कि एकेडमिक बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशंस आके डिस्कस होके काउंसिल इनको फाइनलाइज नहीं करती। इस वक्त जो एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया चल रहे थे एज अ टेम्पररी मेजर उसको वहाँ पे रखा गया है, बट इनका अनकरीब नया क्राइटेरिया जब आ जाएंगे तो आप सबके सामने आ जाएंगे। Thank you, sir. Thank you for clarity on that. And with that, we are going to wrap up today's session on PG training and the role of PMC. Thank you all for joining us, Dr. Asif Loya. Thank you for joining us, Dr. Arshad Taqi and Dr. Rumina. Hassan, thank you for taking time out of your busy schedule to educate everybody, to clarify a lot of things जो आजकल social media पे इस तरह चल रही होती हैं. On that note, for the viewers जो इधर देख रहे हैं और जो YouTube पे बाद में देखेंगे, I would like suggest कि please follow PMC के जो official social media handles हैं. There is a lot of misinformation जो propagate हो सकती है और होती है on a regular basis. आप हमें follow करें and we will make sure that timely and accurate information reaches all of you PMC stakeholders. और इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम और सेशंस इस तरह से करते जाएंगे, आपके क्वेश्चंस भी लेते जाएंगे और हम उनको आंसर भी करते जाएंगे. थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू डॉक्टर अरशद तकी, डॉक्टर आसिफ लोया एंड डॉक्टर रुमीना हसन. आपने टाइम निकाला एंड आई गेस दैट इज इट फॉर टुडेस सेशन. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Hafiz. 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 Hafiz.